हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की जर्नी रहेगी लिथम से चंद्रनाहन तक की। कहते हैं चंद्रनाहन में 7 लेक्स हैं और बहुत ही रेयर है कोई वहाँ पर सारी लेक्स देख के वापस आया हो, बट हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट हम 5th लेक तक जा सकें। सो आगे चलने से पहले मैं क्विकली आपको गूगल अर्थ पे दिखाना चाहूँगी कि हम जांगलिक से चले एंड देन वी वेंट टू मैगी पॉइंट और द्याराथाच में एक दिन रुक के एंड देन वी वेंट टू लिथम और आज हम चले हैं चंद्रनाहन की ओर। सो नाउ लेट्स बिगिन दिस ट्रैक। आज की जर्नी लगभग 7 किलोमीटर्स की रहेगी और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रोडू से आए हुए हैं कुछ लोग लोकल्स, उन्होंने भी यहाँ पर टेंट लगाए हुए हैं, बट ये चंद्रनाहन कल होके आ गए थे। और ये स्पॉटी जो है ही इज़ नॉट एबल टू वॉक ऑन द रॉक्स, बट स्टिल उसने गोदी में भी नहीं आना है, पर उसने खुद ही चलना है। So sometimes you have to give company to your loved ones. So मैं भी वही कर रही हूँ हम दोनों साथ में पानी पी रहे हैं। So अभी तक आसान ट्रैक था बट अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। तो जिसने डाल दिया है स्पार्कल को अपने बैग में और हम चले ऊपर की ओर। 2 घंटे की चढ़ाई के बाद अब हम फाइनली पहुंच गए और यहाँ का व्यू इट इज़ जस्ट अमेजिंग, स्पेक्टेक्युलर। यू वुड लिटरली हैव टू स्टैंड हियर टू सी दिस व्यू, इट्स अमेजिंग। It's kind of scary also from up here. यहाँ पर पहुँच के हमें बहुत ही अच्छा लगा, बट क्योंकि आगे की जर्नी बाकी थी तो फिर हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक पाए। वी हैड टू कंटिन्यू आवर जर्नी। फर्स्ट लेक पूरी तरह से सूख चुकी है और ये सेकंड लेक है, ये भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सूख चुकी है। तो हम आगे की ओर चल पड़े 3rd and 4th लेक की ओर। ये एक और लेक आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें फिर भी काफ़ी पानी है और रास्ता बहुत ही ज़्यादा पथरीला है। और स्पॉट्स को मिल गया एक नया फ्रेंड, हिज नेम इज़ ऋतिक। सो अराउंड 45 मिनट्स चलने के बाद हम पहुंच गए 5th लेक पे और इसका पानी बहुत ही क्लियर लग रहा है और ये बहुत ही सुंदर जगह लग रही है।
कहते हैं रोडू के शिकड़ू देवता जी जो हैं उनका ओरिजिन इसी स्थान पे हुआ था और वो हर 8 साल में एक बार ही अपनी होली बात के लिए यहाँ पर ज़रूर आते हैं। I think Sparkle is the first husky to come to Chandranahan and he's just 2 months old and he's here. ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्लेशियर जो है यहाँ पर लेक के ऊपर आया हुआ है और वी आर लिटरली स्टैंडिंग ऑन दिस ग्लेशियर राइट नाउ विच इज़ ऑन द लेक। बचपन से जहाँ मैंने सोचा था आने के लिए, फाइनली आई एम हियर एंड वेरी हैप्पी बर्थडे टू मी एंड आई नो एवरीबडी बैक होम दे मस्ट बी विशिंग मी टुडे। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। So there you can see Ojas coming down. He's trying to rappel but हो नहीं रहा क्योंकि स्नो थोड़ी सी सॉफ्ट है and twice he did that. Imagine इतना ऊपर चढ़ के जाना। And here you can see I'm going even more crazier. मैंने ओजस की हैट ली और हवा में उछाली और ये गई 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 and I wish I could just catch it but नहीं गई भैंस पानी में and ओजस is going to kill me. सो ओजस की हैट पानी में डुबोने के बाद वी हैड नो टाइम टू टेक इट आउट बिकॉज बारिश शुरू हो गई और वहाँ पर हम ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहते थे। बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है यहाँ का वेदर, एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो जाती है तो वी हैड टू लीव क्विकली। रंजीत इज़ रियली फॉन्ड ऑफ हिम एंड उठा के उसको अब वो लेके जा रहे हैं, अब उनकी बारी है। So a final goodbye to this beautiful place. I think चढ़ाई चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल है उतराई उतरना और सारे थक चुके हैं अब, so we are taking a rest over here. तो इस पानी में एक पत्थर ऐसा है जिसके ऊपर अगर पैर रखो तो आपका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है, तो ये वही देखने के लिए यहाँ पर बैठ गए कि कौन कौन उस पत्थर के ऊपर पैर रखता है, क्योंकि इन सब ने तो सबने ही रखा है। So the ladies are all good. So Sparkle is everybody's favorite, so everybody is fond of picking him up. तो जब हम कैंप साइट वापस पहुंचे हमें पता चला कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी दिन में, बट थैंक गॉड वी वर सेफ और चंद्रनाहन में बारिश नहीं हुई, बस थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी में ही हमारा सारा टाइम निकल गया एंड इट वाज अ लवली डे। So you can see Sparkle having fun in the background. जिसके पावर बैंक में अभी फोर लाइट्स है और देखिए जरा मेरे पावर बैंक में कितनी लाइट्स है, थ्री हो गई एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद
110 mAh and 120 mAh. Hopefully it will be done. And Kitty bye, sleeping. बारिश होने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और हमने जैकेट्स पहने हुए हैं, ब्लैंकेट्स लिए हुए हैं, फिर भी हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आई डोंट नो कल क्या होने वाला है, क्योंकि धुंधा तो और भी इससे हाइट पे है और वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। तो आई थिंक इट इज़ टाइम टू गो टू स्लीप एंड लेट्स लाई डाउन, टेक सम रेस्ट फॉर टुमारो। और ये चलते चलते अब हम वीडियो के आखिर में पहुंच गए हैं। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आई होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन